Good morning everyone. My name is Supriya Kumari. Now we are going to learn the science. In this, we are going to learn reproduction in animal, new chapter. So, here first we will learn what is reproduction. So, reproduction is meaning of reproduction. You can reproduction, the process of animals reproduce, the process of animal reproduce the young ones is called reproduction. So what is reproduction here? So what is reproduction? The process of animals reproduce the young ones is called reproduction. Okay, so the animal, they will reproduce. They will give birth to the young ones. Okay, that's called they reproduce the young ones. Is that process is called reproduction. Okay, so ये क्या है? The process of animal reproduce the young ones. एक प्रोसेस मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. मतलब जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन. तो so now we have learned what is reproduction. So now we will see some animals that give birth to the young ones. So that animals are lion. Lion is also an animal that give the directly birth to the young ones. Lion. Human beings. Lion, human beings. So the two examples of the animals that give the directly birth to the young ones is called reproduction. Okay, so which animal that give birth to the young ones is called reproduction. So the lion and the human beings. Okay, that are we. So even the human beings also give birth to the young ones. They give the directly birth to the young ones. Okay, so now we will see. Okay, what is this called? Lions and human beings. Okay, they give birth to the young ones. What are they called as? They are called as mammals. In the lesson of Animal Kingdom, I have taught you. Okay, in the lesson of Animal Kingdom, I have taught you mammals are the animals which give directly birth to the young ones. Okay, so we are learning about mammals now. So lion and human being is a mammal, and even the dolphins and whales. The dolphin and the whales are similar to the fishes, but also they give birth to the young ones. So the mammals give birth to the young ones. Okay, that's called mammals. So here we learn about mammals, and some animals are even there like bird that does not give directly birth to the young ones. They lay an egg. Example, a bird. The common bird is a hen. So the hen lays an egg, and from that the babies means the young ones
Hatch means it brooks. That process is called hatch. Okay, so it hatches and the young ones come out. Okay, so the birds. So the birds. So you can say the birds does not give birth to the young ones. So the birds lay eggs. Okay, the birds lay eggs and from that the babies hatch out. Okay, so birds are not the mammals. Okay, birds are not the mammals. So we learned about the some mammals that lay egg, that give birth to the young ones, and birds that lay eggs. So this was about that. And one more thing. So you know amphibians. I have taught you in the animal kingdom lesson. So the amphibians even lay eggs. Okay, the amphibians lay eggs. The amphibians lay eggs. Okay, even the birds like that. The amphibian is. It also lay eggs. So the amphibians, like example, a bird. So you can see the bird example, a hen lays an egg that hatch out. From that the egg ones come out. So the bird first it lays egg. So it's not a mammal. Mammal is who means which living animal. First which living animal give birth to the directly young ones. That's called mammals. Okay, so the amphibians example of frog, it is an amphibian. Okay, so the frog. Okay, frog you can say amphibians lay eggs and the frog is like amphibian. Okay, but and the frog even lay eggs. You can tell in the animal frog is it lives in the water. Okay, means it lives in water and it gives birth to the it gives the eggs. Okay, it lays the eggs. So it is even similar like bird. It's even similar like birds. So bird even lay eggs. Even the frogs lay eggs. Okay, and you can tell the butterflies. Butterfly lay eggs. Okay, so you can see the image of a frog's eggs. So the frog's eggs are known as spot. So you can see here, that's a spot. So now we will see the structure of the egg. How does this egg is? So यहाँ पर lions और human beings क्या है? तो lions और human beings animals को birth देते हैं. ओके, जैसे कि लायन जो एनिमल्स को बर्थ देते हैं मीन्स एनिमल्स एंगल्स, इन एनिमल्स का एंगल्स को बर्थ देते हैं और ये डायरेक्टली बर्थ देते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मैमल्स. तो जो मैमल्स बर्थ टू द एनिमल्स, मैमल्स जो होते हैं वो बर्थ एंगल्स को दे देते हैं, मतलब डायरेक्टली एंगल्स देते हैं. ओके, उसे बोलते हैं मैमल्स. तो यहाँ पर डॉल्फिन्स और व्हेल्स भी एक मैमल है, वो भी बर्थ देता है एंगल्स को. एंगल्स मतलब बेबीज. ठीक है, डॉल्फिन्स और व्हेल्स भी देते हैं, पर ये दोनों फिशेस जैसे. ओके, पर ये दोनों एक्चुअली मैमल्स है. ठीक है, सो अभी ये था जो एनिमल्स बर्थ एंगल्स को देते हैं. अभी देखते हैं कौन से एनिमल्स अंडे देते हैं. तो है बर्ड्स, फ्रॉग्स, बटरफ्लाइज, ये सब ये तीनों एग्स देते हैं. ठीक है, जैसे कि बर्ड में कॉमन हैन का जो अंडा होता है, ठीक है, हैन अंडा देता है, फिर उससे एग वन निकलता है. ठीक है, वो हैच होता है. हैच मतलब वो टूटता है, उसे बोलते हैं हैच. ठीक है, सो जो हैन अंडा देता है, एक बर्ड है. ठीक है, तो हैन जब अंडा देता है उससे हैच होता है, वो टूटता है, तो उससे एग वन निकलता है. सो ये तीनों एग्जाम्पल्स है जो मीन्स ये तीनों एग्जाम्पल्स है जो एक्स को देते ले एक्स.
ठीक है। सो यहाँ पर फ्रॉग का एग्स कैसा होता है, तो फ्रॉग्स का एग्स को हम लोग बोलते हैं स्पॉन। स्पॉन आप यहाँ देख सकते हैं, SPAWN। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं, सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। ओके, सो दिस इज द एग, this is the yellow part, so this also have some parts. Okay, now let's see. So this yellow part is known as yolk. Okay, and this the white part it will be, you can see here is the white part, there will be that's called albumin, and this the outer shell that protects the egg, that is a shell. Okay, and this is a membrane, a thick layer it is. Okay, and egg sac. So these are the parts of eggs. So ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एग है, एग ऐसा ही रहता है। सो ये है येलो कलर का पार्ट और ये व्हाइट वाला। तो ये जो येलो कलर पार्ट है उसे बोलते हैं योक, और जो ये व्हाइट वाला है उसे बोलते हैं अल्ब्यूमिन, और ये आउटर वाला वो हार्ड रहता है, उसे बोलते हैं शेल। ठीक है, ये शेल अंडा को प्रोटेक्ट करता है, और ये है मेम्ब्रेन, वो अल्ब्यूमिन के पास में ही एक थिक लेयर होता है। ठीक है, और एग सैक। ठीक है, सो ये सब पार्ट्स ऑफ एन एग का फुल स्ट्रक्चर है, मींस ये सब पार्ट्स है उसका, वो सबका नाम है ये सब। सो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बर्ड्स मींस वो रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो पहले हम लोग ये जानना, मींस फर्स्ट वी विल लर्न द बर्ड्स यू सी। ओके, they lay eggs, the birds lay eggs. When they lay eggs, suddenly that does not hatch and the young ones come out. You know, when the birds lay eggs, they should be sit on that, so that will be warm. Okay, so the birds should keep the eggs as warm, and then the babies, means the young ones, will hatch out. Okay, so that bird's egg is similar like this. Okay, so now we will learn the process of the reproduction. Now we will learn the reproduction of some birds and animals. Okay, so first, life cycle of hen. So first we will see the hen. Okay, so the hen lays egg. In that eggs, some blood vessels will be developed. Okay, and inside the egg there is a yolk, how I told you. In that yolk there will be an embryo. Okay, that embryo has the young ones. Okay, so the yolk provide food for the embryo, so that eyes of the embryo will be seen in the 12 days. Okay, embryo means the young ones. Okay, so the eyes of the embryo will be seen in the 12 days when it sits. So, and then in 18 days wings and feet can be seen. In the 18 days, the wings of the young ones of the hen will be seen, and the feet also. So after wings and feet, in 21 days the egg hatches. The egg hatches. Okay, it breaks, and from there the chicks come out. The chick become hen, and it lay eggs, and that become and their blood vessels developed, and eyes can be seen in the embryo. In the 12 days like this, only the full process will be repeated. That's a non-stop process. Okay, so this is the life cycle of hen. How does the hen fully heals? Okay, so this is the life cycle of hen. ये क्या है? ये life cycle of hen है. अभी एक्सप्लेन करती हूँ. hen मतलब मुर्गी. तो मुर्गी अंडा देती और उस अंडा में ब्लड वेसल्स, ठीक है, वो आता है. और फिर एम्ब्रियो मतलब योक के अंदर एम्ब्रियो मिलता है, ठीक है. उस एम्ब्रियो में एंगल्स डेवलप होता है, ठीक है. सो जो एम्ब्रियो होता है उसमें एम्ब्रियो मतलब जो चिक, ठीक है, जो छोटा एंगल्स हैन का, वो उसे बोलते हैं एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो में आइस फिर दिखता है, ओके, 12 डेज में. और फिर
18 डेज होने के बाद उसमें पंख और फीट पैर, ओके, वो अभी आता है 18 डेज होने के बाद। और फिर जब 21 डेज होता है, जो एग होता है फूट जाता है, ठीक है, द एग हैचेस, और फिर उस अंडा में से चिक निकलता है, तो फिर से चिक बड़ा होता है, हैन बनता है, ओके, और हैन फिर एग देता है, और वही फिर ब्लड वेसल्स बनता है, फिर आई दिखता है उसमें, फिर पंख और पैर बनता है। ऐसे ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलता रहता है, ठीक है। सो ये सब करने के लिए जो हैंड होता है उसे जो अंडा के ऊपर बैठना पड़ता है। सो हैंड sit in the hand sits on the egg. The hand sit on the eggs. This process is called incubation. What this process is called? Incubation. Okay, this process, the hand sits on the eggs. Okay, that process is called incubation. So जब hen होता है वो egg पे बैठता है, उस process को बोलते हैं incubation. So for today this is enough. So thank you for watching my video. In next video we will learn about new topic.